Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Sensex and Nifty fall marginally amid concerns over border tensions with China and spiking coronavirus cases. Asian markets remain range-bound even as Wall Street indices surged after a record jump in US retail sales. And procurement of wheat from farmers touches an all-time record of 382 lakh tons in the country. चीन के साथ सीमा पर तनाव और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का आर्थिक सुधार पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के बीच सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट पर हुए बंद। अमेरिका में खुदरा बिक्री में रिकॉर्ड उछाल के बाद वॉल स्ट्रीट के सूचकांकों में आए उछाल के बावजूद एशियाई बाजारों में कारोबार सीमित दायरे में हुआ और देश में किसानों से गेहूं की खरीद 382 लाख टन के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर जा पहुंची। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। चीन के साथ सीमा पर तनाव और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का आर्थिक सुधार पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के बीच प्रमुख बाजार सूचकांक सेंसेक्स आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच 97 अंकों की गिरावट में रहा। दिन में 601 अंकों के दायरे में घटने बढ़ने के बाद बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.29% की मंदी से 97 अंक कम होकर 33,508 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.33% की मंदी से 33 अंक कम होकर 9,881 पर आ गया। हालांकि विस्तारित बाजार में आज बढ़त का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक को 0.7% का फायदा हुआ। Equity benchmark Sensex today dropped 97 points in a volatile session amid concerns over broader tensions with China and the impact of spiking coronavirus on economic recovery. After guy rating 601 points during the day, the 30-share index closed 97 points or 0.29% lower at 33,508 points. Similarly, the NSE Nifty settled 33 points or 0.33% down at 9,881. On the other hand, in the broader market at the BSE, mid-cap ended 0.3% up, while small-cap rose 0.7%. Kotak Bank was the top laggard in the Sensex pack, shedding over 2%, followed by ITC, Power Grid, Mahindra and Mahindra, HDFC, Asian Paints and NTPC. On the other hand, Maruti rallied over 4%, Bharti Airtel, Axis Bank, IndusInd Bank and Bajaj Finance were also among the gainers. According to traders, border tensions with China spike in COVID-19 cases and unabated foreign fund outflows weighed on investor sentiment. Provisional exchange data showed foreign institutional investors sold equities worth around 1,479 crore rupees yesterday. India witnessed its highest single-day spike of 2,003 COVID-19 deaths, pushing the total to 11,903, while cases rose to 3,54,065 with 10,974 new infections. The number of cases around the world linked to the coronavirus has crossed 81.62 lakh and the death toll has topped 4.41 lakh. We're joined by Avinash Gorak Shakkar, market analyst on our program Market Mantra. Avinash, a very warm welcome to you in the program. Yeah, good evening. Good evening, Avinash. How would you describe market performance today with the Sensex down by 97 points and the Nifty also down by 32 points? So how would you describe the market breadth and some of the key sectors which have gone and which have come down? I think markets are witnessing a lot of volatility, largely because of the fact that there are now
renewed fears that possibly the second wave of coronavirus has hit countries like China and Europe, some parts of France. And the coronavirus hit rate in India has actually seen a sharp rise, in the active number of cases. So I think now with almost a major part of the earnings season over, I think the markets would focus on what happens on the global front, especially from the US markets. Clearly, the markets have run up largely because of a large amount of liquidity entering the markets, and to a large extent also short covering has happened. So I would believe that, markets would possibly take a little more time before they cross the 10,000 level again. And I think typically, since everyone is aware that the first quarter numbers are not all that great, markets are obviously expecting that only the liquidity rally would obviously pep up the markets. And I think that is something which now in the last few days we have seen the FI numbers also going negative. So to that extent, there could be a slight sell-off. I think probably, I would believe that, sectors like aviation, infrastructure, capital goods, autos, probably could see a little bit of sell-off. On the banking side, also, I would believe that, we could see a little bit of medium to, soft correction. But overall, it's going to be a stock-specific market where one needs to be a little careful by not just looking at the broad indices and keep a stock-specific. अविनाश जी, जैसे आपने कहा कि इस सप्ताह सोमवार से जो एफपीआईज हैं उन्होंने भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू किया है, एक नेगेटिव ट्रेंड हम देख रहे हैं, लेकिन कल ही यूएस फेड ने एक बहुत मेजर कॉर्पोरेट बॉन्ड बाइंग की अनाउंसमेंट की है, जिससे और लिक्विडिटी आएगी इकोनॉमिक सिस्टम में. सो आपको लगता है कि इससे जो भारतीय बाजार है उसमें एफपीआई फ्लो को फिर से एक बूस्ट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि फेड ने अभी उनकी कमेंट्री में कहा है कि क्लियरली जब तक इकोनॉमी सुधरती नहीं है तब तक पूरी तरह से लिक्विडिटी सपोर्ट वो देते जाएंगे. और जिस प्रकार का रवैया अभी ट्रम्प साहब का है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का, ऐसा लग रहा है कि इजी लिक्विडिटी पॉलिसी फेड एम्प्लॉय करेगी जब तक नवंबर में इलेक्शन नहीं होते. तो ब्रॉडली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी बात है कि एक्सेस लिक्विडिटी इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में भी जरूर आएगी. लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम कॉर्पोरेट नंबर्स और मैक्रो डेवलपमेंट्स को भी ना इग्नोर करें. तो मोटा मोटी सिलेक्टिवली स्टॉक्स में जरूर पैसा आएगा, बट ये मान के चलना कि एफआईएस रोज बाइंग करेंगे, ऐसे भी कोई दिन आएंगे जब वो थोड़ा सा हल्के हो जाएंगे. और जिस प्रकार की तेजी उन्होंने देखी है 1-2 महीने में, थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी आई थिंक इज क्वाइट ऑब्वियस. ये एफआईएस भी थोड़ा शॉर्ट टर्म नजरिया लेके अपना पैसा कमा के निकालेंगे. तो ओवरऑल लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली पैसा आएगा, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मार्केट वोलेटाइल जरूर रहेगा. ये डेफिनेटली ऐसा ट्रेंड लगा है. अविनाश जी, आज अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी का रुख था. हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में हमने गिरावट देखी और अनलॉक शुरू हो गया है. अनलॉक को शुरू हुए लगभग 15 दिन हो गए हैं. सो इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर आपकी कितनी आशाएं हैं? क्या लगता है आपको बाजार क्योंकि कंपनियों से ही जुड़ा हुआ है, सो कंपनी जगत में सुधार के कितने आप प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि लॉकडाउन का ओपनिंग हो रहा है, तो इस न्यूज के कारण सेंटिमेंट मार्केट में पॉजिटिव हो रहा है और काफी समय के बाद 2 महीने के बाद हो रहा है. तो डेफिनेटली ये अच्छी बात है, मार्केट्स को ये चीजें अच्छी लग रही है. बट मुझे लग रहा है कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है नंबर्स में आने के लिए शायद हमको 1-2 क्वार्टर और वेट करना पड़े. हमको लग रहा है जो पहली तिमाही और जो दूसरी तिमाही कंपनी के नतीजों पे आएगी वो काफी खराब होगी, और जो भी इम्प्रूवमेंट आएगा वो तीसरे तिमाही से होगा. होपफुली कोरोना वायरस तब तक नॉर्मल होगा, हम सारे कंट्रोल में रहेंगे. तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स में आने के लिए शायद आपको सितंबर के बाद वाला क्वार्टर देखना चाहिए. बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि पहला क्वार्टर काफी खराब आने की एक्सपेक्टेशन है और मार्केट ये बिल्कुल जानता है. बट ओवरऑल जो भी अपसाइड अभी आप देख रहे हो ऑटो में या सीमेंट में, इंफ्रा में या कैपिटल गुड्स या बैंक्स में, ये ज्यादातर लिक्विडिटी का इम्पैक्ट है, जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है और ज्यादातर एफआई और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हो रही है. और मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी में सिलेक्टिवली जहां कंपनी अच्छी कर रही है वहां पे हमने देखा है कि सिलेक्टिवली वैल्यू बाइंग जरूर हो रही है. लेकिन अभी भी माहौल थोड़ा सा कॉशन का है, क्योंकि अभी भी इंडिया चाइना का जो डेवलपमेंट हो चुका है इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा कॉशियस रवैया एम्प्लॉय कर रहा है. होपफुली अगर ये कोई बड़ी बात होती नहीं है तो मार्केट्स आगे डेफिनेटली एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखाएंगे. लेकिन 10,200 10,100 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट प्रूव हो जाएगा. Avinash, you just spoke about optimism, especially in the
auto sector, the index went up by 0.7%. We're also seeing a long build-up in stocks like Escorts and Maruti Suzuki, especially Escorts, which is now seeing a fresh 52-week high, and then Maruti Suzuki went up by 4% with some a partnership with Karur Vyasa Bank. Is this based on sales figures improving, as you mentioned, after September? Is this a bet being taken in the market right now? Yeah, I think, now if you talk about companies like Escorts and Maruti, I think one factor which is driving interest and upside in these stocks is the fact that most market observers expect that, the revival which will be coming, it will be coming first from rural markets. And I think both Escort as well as Maruti Suzuki have significant presence in rural markets. Plus, if you see their balance sheets and if you see their business model, these are companies which have got very little debt on the balance sheet. They are fairly cash-rich companies, so they have enough sustainability, advantage, to take care of these difficult conditions. So I think, rural theme in the markets is extremely strong. In fact, we are seeing a lot of interest in fertilizer, in pesticide companies, tractor companies. So I think this rural-related theme is definitely one of the reasons why you've seen a lot of interest in the automotive companies, especially having a large rural base like Hero MotoCorp and Maruti and Escort. So I think this will continue for some time. और आप रूरल थीम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मॉनसून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बहुत ही पॉजिटिव फोरकास्ट आ रहे हैं. सो इससे आपको लगता है कि मॉनसून से न सिर्फ रूरल इंडिया बल्कि पूरे इकोनॉमी के सेंटिमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर का जो शेयर जीडीपी में है वो मुझे लग रहा है 17-18% है. तो पूरी तरह से एक्सपेक्ट करना कि एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर अच्छा होता है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, तो ये कहना थोड़ा सा रॉन्ग होगा. बट ओवरऑल हमको लग रहा है जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो काफी पॉजिटिव है. अच्छा मानसून आता है तो रूरल रिलेटेड डिमांड डेफिनेटली अच्छी होगी, और स्पेशली जो रूरल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं एफएमसीजी के, ऑटो के, यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा खरीदने का माहौल बनता है. तो मेरे ख्याल से मार्केट यही एक्सपेक्ट करेगी कि मानसून और ऑब्वियसली कोरोना का जो वायरस आउटब्रेक है वो थोड़ा कम हो, तो उसके बाद ही मार्केट्स में अच्छी लंबी तेजी आएगी. बट ओवरऑल जो रूरल मार्केट है वो डेफिनेटली बॉयंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का इफेक्ट अर्बन मार्केट्स के मुकाबले में थोड़ा सा कम है. Avinash, the top performer in market performance today was the telecom index, which went up by 2.3%. There is news about Bharti Airtel and Vodafone Idea about their adjusted gross revenue and of course the tie-ups that they are entering into right now. How do you see the telecom index, which has done very well during lockdown, but post-lockdown as well, with businesses seeing another way of communicating and doing business online? I think telecom sector is one sector which has done very well during the lockdown, and I think even after the lockdown, when hopefully normalcy starts, you're going to see a resumed, you're going to see a stronger growth for most of the telecom players, including Bharti, Reliance Jio, and Vodafone. Largely because, I think data consumption has increased significantly. I think a lot of people are doing a lot of online activities, both for corporate as well as for recreational purposes. So I think that is one factor which is going to help these companies generate a more profitable ARPU. In fact, the Bharti Airtel management had clearly mentioned on the con call that, they expect a very significant rise in their ARPUs. So once this comes, you're going to see a lot of pricing power for these players. And, markets have come down, have seen a reduction of almost 18-20 telecom players to just 2-3 players. So market is obviously optimistic that, all these companies would significantly benefit in terms of profitability, because supply side, there are not many players, and this is like a essential service which I think most people, use, in all times. मिस्टर गोरक्षकर, ये जो बैंकिंग सेक्टर है या फाइनेंस सेक्टर है उसके आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उस पर काफी एक कहें कि निर्भरता है इकोनॉमिक रिवाइवल की. सो आपको लगता है कि इस पे जो इतना ज्यादा जो भार है उसकी वजह से शायद प्रॉफिटेबिलिटी कहीं हिट हो सकती है? बैंकिंग सेक्टर मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सही कहा. और ओवरऑल मार्केट को अगर बढ़ना है, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, तो बैंकिंग सेक्टर का रिवाइवल होना बहुत जरूरी है. अगर हम बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ के बारे में बात करेंगे और आउटलुक की बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है अगले 6 से 8 महीने काफी दिक्कत भरे होंगे. और स्पेशली जो सेगमेंट्स एनबीएफसी के है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, माइक्रो फाइनेंस है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे काफी पैसा इन्होंने अनसिक्योर्ड कैटेगरी के लोन्स को दिया है, जो वापस
अगर नहीं आता है तो इनके लिए दिक्कत रहेगी। काफी बैंक मोरेटोरियम पे बैठे हैं, लेकिन अगर होपफुली 31 अगस्त के बाद भी मोरेटोरियम एक्सटेंड किया जाता है तो इन बैंकों के लिए ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा भारी नुकसान वाला हो सकता है। तो लॉन्गर टर्म में बैंक अच्छे करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो पेन है ये मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को डेफिनेटली डायरेक्टली हिट होगा और ये इनके नंबर्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। Avinash ji, with what we are seeing with border clashes between India and China, including deaths related to conflicts at the Ladakh Valley, do you see a supply chain disruption in the near to medium term which can impact industries like pharmaceuticals in India? Yeah, I think more than that, I think this event which occurred yesterday is a little disturbing because, because this event was definitely not expected, from both sides. And I think if this tension is not diffused at the earliest, then I think the market, as well as you mentioned, supply chain relationships are going to have a very severe problem, especially, for pharmaceutical companies in India, which actually, even as of now, import a large part of their APIs from China. In fact, recent reports indicate that API prices have increased significantly, and the dependency of Indian companies still depend on China. So I think, one has to see this from a near-term perspective. If this situation is diffused quickly, then I think things could be back to normal. But, unfortunately, if this situation doesn't improve, then I think it could definitely impact the market sentiment as well as, varied allied sectors like the pharmaceutical sector. बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए अविनाश जी। श्रोताओं, ये थे अविनाश गोरक्षकर, बाजार विशेषज्ञ, जो शेयर बाजार के आज के चलन पर हमसे बात कर रहे थे। और अब लेंगे एक छोटा सा विराम और उसके बाद बाकी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, दो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। मार्केट मंत्रों में आपका फिर स्वागत है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर चर्चा करेंगे। एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख सतर्कता का रहा। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ने से तेज आर्थिक सुधार में बाजार के भरोसे के लिए चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि मई में अमेरिका में खुदरा बिक्री में फिर आई तेजी ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका के 6 राज्यों में नए संक्रमण रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंच गए हैं और चीन की राजधानी पेइचिंग में कोरोना वायरस के ताजा प्रसार को रोकने के लिए हवाई उड़ानें नियंत्रित कर दी गई हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जापान के निक्केई सूचकांक में आज 0.6% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त में रहे। हांगकांग के हैंगसेंग में लगभग 0.6% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां तेजी का रुख था। लंदन का फुट्सी और जर्मनी का डैक्स दोनों 0.6% की बढ़त पर थे। फ्रांस के कैक में 1.1% का उछाल था। Moving on to the U.S. market, Wall Street surged yesterday as a record jump in retail sales indicated the U.S. economy is on the road to recovery 5 months into its pandemic-inflicted recession. All 3 major U.S. stock indices were sharply higher and on course for the third consecutive daily gains. The Dow about 11% and the S&P remained about 8% below the record closing highs reached in February. The tech-heavy Nasdaq hovers about 1% below its all-time closing high reached on 10th of June. The Dow Jones gained more than 2%, the S&P 500 surged 1.9%, and the Nasdaq Composite climbed 1.8%. Let's join with Jayanto Das now. Jayanto, I hope you're with us online. Yeah, good. Jayanto, what are the reasons behind the record jump in retail sales in the U.S. economy, especially since it's worst affected globally when it comes to the COVID-19 pandemic? Well, typically there are 2 factors which will be focusing on why this particular retail sales jump has happened. One is the pent-up demand, which typically, after around 6 weeks of closure, assuming that the market in the US closed from the 3rd to 4th week of March in various states, and if they started opening up on 1st week of May itself,
So the 6 weeks of closure has driven in a pent-up demand, which we saw getting reflected into this 17 to 18% jump. And the other part is the psychological effect, which researchers in the retail market call as revenge shopping, where what happens is when people are stuck up at home with some liquidity to save, and they're not allowed to do any sort of shopping outside. So as soon as the market opens, there is a psychological impact where people go out and try to buy things. So that has taken its effect, and as such, the positive numbers have happened. And I think it's a good thing for the US economy to at least show some good sparks in terms of, jump in sales. जयंत, जो आप ये बता रहे हैं, दो फैक्टर्स, पेंटअप डिमांड और रिवेंज शॉपिंग, आपको लगता है कि भारत में भी इनका हम असर देखेंगे और भारत में भी डिमांड फिर से रिवाइव होगी? देखिए, भारत और यूएस का जो कंजम्पशन पैटर्न है सोनू, वो थोड़ा बहुत अलग है. वजह इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक नीड बेस्ड कंजम्पशन का ज्यादा चर्चा होता है भारत में, और वहाँ पे एक नीड से भी ज्यादा एक ग्रीड बेस्ड भी कंजम्पशन चलते रहते हैं. तो ये थोड़ा बहुत कंजम्पशन पैटर्न अलग है. दूसरी बात यह है कि भारत में लगभग ऑलमोस्ट सारे मार्केट कहीं ना कहीं मोरल जगह सारे, अब बड़े शहर की बात करें तो सारे खुले हुए हैं, लेकिन साथ में आंकड़े जो है कोरोना का विक्टिम्स का, वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. तो ऐसा स्थिति में मैं नहीं मानता हूँ कि इमीडिएटली हमें कुछ डिमांड स्पॉट जैसे हम यूएस में देखते हैं उस तरह का नजर बेशक इतना जल्दी आएंगे. हाँ, शायद अगर सितंबर अक्टूबर तक जब दिवाली का एक्चुअल शॉपिंग का सीजन शुरू होता है, उस वक्त शायद कुछ हम जंप बेशक दे सकते हैं, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर नहीं, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेशक हम देख सकते हैं. Jayant, initially with our first expert, my co-anchor spoke about the discount rate at which the Fed was lending money, and that has been pumped into emerging markets like India. How do you see the similar pumping of money into the real economy, especially in this period where the US elections are due and there is still the conflict with China, between the US and China? How do you see the markets, especially the US market, performing in this short to medium term? Well, there are two aspects to it, Arjun, and I believe that for Trump to come back with a win, at this point of time, his ratings are one of the lowest ever the US president has ever received, number one. And number two, historically, if you take a trend of the last 100 years, no president has ever won from these ratings. So, but taking a cue from here, what I also believe is there is a swing population vote of around 9 to 11% among the three critical states in the US, which would be contributing heavily to how the elections might go. And I think taking a cue from there, the local, the US administration, as well as the US political impetus would be to focus on to ensure that the markets do well. So I have a positive aspect on the markets picking up, say, somewhere around September, October, because the elections are in November. That's one area. The other part is globally, we also have to see, Arjun, how the corona factor is shaping up. Because, yes, the European markets are gradually limping back to opening up, not to normalcy, but to opening up. But we do have cases which are coming up once again. For example, there was this big news where Dallas Moon, I think yesterday, who was already detected with corona and she recovered in February, has again been detected yesterday, I guess. So these sorts of recurrence are still there. And finally, as we have always been said last 2 months, unless a proper medicine or something of that sort is discovered or brought into the market that would actually help prevent the spread of corona, this threat will be keeping on looming. We also must add over here, when I say when I speak of how the US stock market would do, the specific drug which has been discovered which has been administered in some of the European nations, which shows that specifically critical patients, if they're given that particular drug, they are performing much better and the chances of survival are quite high. And tests of over 1,000 people have turned out to be extremely positive. Now that has also to some extent, not only benefited the stock markets globally, but to some extent the oil markets too, which I guess we are carrying as part of this story in the next few minutes. So on the whole, if I need to conclude in the terms of how the stock markets would fare up, there would be bumps and hiccups and all those things would happen in the next 4 to 5 months in how the US stock behaves. But I do believe strongly that the government would try to ensure some positive measures
And in fact, there is also a huge talk of another package coming up in US market very soon. So those sorts of things would try to perk up the market. And I think that will also be needed. As they say, before elections, every government tries to ensure that at least the markets are stable and giving good returns. आइए अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। रुपए में आज डॉलर के मुकाबले शुरुआती गिरावट के बाद तेजी आ गई और कारोबार की समाप्ति पर रुपया कुल 4 पैसे की मजबूती से 76 रुपए 16 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार चीन के साथ सीमा पर तनाव, विदेशी फंडों की भारतीय बाजार से निकासी और कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंताओं का दबाव निवेशकों की धारणा पर पड़ा। And now moving on to our third headline story. Government today said that the procurement of wheat from farmers has touched an all-time record to 382 lakh tons. The earlier record was 381.48 lakh tons achieved during 2012-13. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the commencement of procurement was delayed by a fortnight due to the first lockdown and was kicked off only from the 15th of April in most of the wheat surplus states. The ministry said extraordinary efforts have been made by state governments and all government procuring agencies led by FCI to ensure that wheat is procured from farmers without any delay and in a safe manner. The number of purchase centres was increased from over 14,000 to around 22,000 this year by opening procurement centres in all possible locations in addition to traditional mandis. This has helped to reduce farmers' footfall in mandis and ensured proper social distancing. The ministry said this year Madhya Pradesh became the largest contributor to the central pool with 129 lakh tons wheat, surpassing Punjab, which procured 127 lakh tons. Haryana, UP and Rajasthan also made significant contributions to the national procurement of wheat. 42 lakh farmers have been benefited from all over the country and a total of about 73,500 crore rupees has been paid to them towards a minimum support price for wheat. Jayanto, very briefly, could you tell us the reason why wheat production procurement has gone up significantly higher despite the market risk that the economy has been facing? Well, this has been a very, very, focused strategy by both the central government as well as the state governments to, ramp up the procurement. And this was announced, the intent was announced way back in March, third week or fourth week when the lockdown was first imposed pan-India. Because the initial strategy is that we should not let go of even a kilo of food grains which is available out there. And the second part was given that we will have a tough economic situation over the next 3-4 months in terms of facing this particular COVID war. It was important to have the food grain stock at least adequate enough. So there has been a very concerted effort, and I guess the figures tell that it has been a very successful joint effort both by the state as well as the central government. Well, let's have a look at the oil market now. Oil today rose on hopes for economic recovery and for a clinical trial showing a cheap steroid could help save some critically ill coronavirus patients. But fears of a second wave of the virus curbed gains. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $40.30 per barrel, while WTI crude prices were at $37.60 per barrel. Very briefly, do you see the rise in oil prices as a rise in demand in the global economy? Jayanto. Well, there are certain demands too happening because if you remember, the inventories which piled up are vanishing fast, and I guess there will be some pressure in terms of oil prices moving upwards. But having said that, there are also headwinds happening, both the tailwinds and the headwinds, and I believe the oil prices will be remaining choppy in the next 4 to 8 weeks. और अब चलते हैं सोने की ओर। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 18 रुपए की मामूली बढ़त से 48,220 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 380 रुपए महंगी होकर 49,250 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना बिना किसी खास बदलाव के $1,725 प्रति आउंस पर था और चांदी $17.45 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली जयंतो, आपको लगता है कि सेफ हेवन के रूप में अब सोने का आकर्षण थोड़ा कम हो गया है लॉकडाउन खुलने के बाद? नहीं, मैं मानता हूं कि सोने का आकर्षण खास करके भारत में थोड़ा बहुत प्रेशर बनते रहेंगे। हालांकि प्राइस में काफी उतार चढ़ाव हम देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले सीजन जैसे दिवाली हो गए या शादी का सीजन हो गए, उसमें हमेशा प्रेशर रहता है सोने के ऊपर। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें हम तो मैं मानता हूँ कि शायद 4 से 6 महीने तक प्राइस में 2 से 3 हजार रुपए का ऊपर चढ़ाव ऐसे चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयंतो। शुक्रिया।
And before we close, a reminder of the headline. Sensex and Nifty fall marginally amid concerns over border tensions with China and spiking coronavirus cases. Asian markets remain range-bound even as Wall Street indices surged after a record jump in US retail sales. And procurement of wheat from farmers touches an all-time record of 382 lakh tons in the country. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.